very good morning, students. Good morning, ma'am. Today we start a new topic. Before we start a new topic, I will ask some questions from you. Don't give collective answers, okay? Do you know about design? Yes, ma'am. Design, we could say designs are different patterns and shapes. Very good. And what do you know about patterns? And where the patterns were used? I really don't know the answer. Okay. So today topic is the textures, okay? Textures. So tell me, do you know about textures? No. So I will show you some cards regarding textures, okay? See, it is visible to everyone. Yes, ma'am. What kind of texture it is? Any guesses? This is the texture of a lady finger. With the help of a single lady finger, we create a very beautiful flower pot. As you can see this. Okay? And again, this to everyone knows. Onion. Very good. With the help of onion, we create a bunch of flowers. Okay? And this one? Leaf. Leaf. With the help of a big leaf, we create a very beautiful tree. Okay? Now guess this. This is little bit tricky. Yeah. This is a spray Spray. painting. Okay? This is a spray. With the help of a toothbrush, we create this painting. Okay? Now I will write the material, the required material, and you will also write them. Okay? So open your copies and write down the material. First, the main material is poster colors. Rough cloth, sheets, brush, the painting brush. The texture material, onion, lady finger, sponge, जय toothbrush. डिपार्टमेंट चलना दूँ So everyone write down the material or not? Yes, ma'am. Yes. So I will show you a model regarding them. Okay. The first, this is a brush painting with the help of drag brush or waste brush that we can't use in paintings. ठीक है? With the help of this brush, we create this kind of texture. This is a potato texture. Okay. What is a potato texture? Potato texture को हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक potato को कट करते हैं, उसको स्टेंसिल की तरह यूज करते हैं. ओके जैसे आती है ना स्माइली स्टेंसिल्स वगैरह, स्माइल का टेक्सचर आता है, वैसे अपनी मर्जी में कुछ भी उसके ऊपर क्रिएट, जैसे मैंने स्टार क्रिएट किया है, आप कुछ भी ड्रॉ क्रिएट कर सकते हो. उसके बाद हम उसको एज अ स्टेम टेक्सचर की तरह यूज करते हैं. दिस इज अ स्पॉन्ज टेक्सचर. With the help of sponge texture, we create a butterfly. Okay, this is a onion texture. This is a lady finger texture, and this is a spray texture. I will create this with the help of a sheet. सबसे पहले मैंने फिगर कट आउट की,
then I put over there. Okay, then I spray out all the boundary, the background, and it look like this. Okay, Okay. now we start the activity. Okay, today we do only the 3 textures of this. ठीक है, the sponge texture, the onion, and the ladyfinger texture. So firstly we do a sponge texture. Take a sponge and tie with the rubber band. Okay, and apply the color on it, which the color you want. Okay, but use only poster colors. Dip it very well कि आपका टेक्सचर अच्छे से निकल के आए. And press it like this. Do you see? Put it like this and press it. Okay, this is a sponge texture. We create a butterfly. Okay, not even butterfly, we use a brick texture also. ये घर की वॉल्स वगैरह पे भी आपने देखा होगा स्पॉन्ज काफ़ी यूज़ करते हैं ब्रिक टेक्सचर देने के लिए. ये वॉल्स होम डेकोर में भी टेक्सचर तो आजकल बहुत ट्रेंड में, और होम घर को डेकोरेट करने में काफ़ी ज़्यादा काम आता है. लाइक दिस. आप लोग 2-3 कलर्स भी अप्लाई कर सकते हो टू क्रिएट अ न्यू कलर. This is a sponge texture. Now we will do a ladyfinger texture. Okay, firstly I do it, then I will distribute the material. Tomorrow you all have to bring your material. Okay, like this. You create a vase with the help of ladyfinger. You also create a flower. Like this. It is visible to everyone? Yes, ma'am. Like this. Okay, and now with the help of onion we give a texture. Now we apply a 2 color base. Okay, the red one and the green one. Apply it like this. Too much color not apply. Okay, the texture not come on the sheet. See? Okay, this is a half flower. If you want full flower, you also apply like this. See? You also give a boundary also. Okay, like this. आप लोग इसके साथ बाउंड्री भी दे सकते हो इस तरीके से. और अगर आप 2 कलर्स को अप्लाई करते हो, जैसे मैंने रेड एंड ग्रीन को अप्लाई किया है, एंड गिव अ लिटिल बिट ट्विस्ट लाइक दिस. इट विच कलर, कौन से कलर की रिफ्लेक्शन आ रही है? ब्राउन. ओके, this is called the textures. Okay, we
हम इस टेक्सचर को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ कर सकते हैं, होम डेकोर में यूज़ कर सकते हैं, ओके, अपने फाइल वर्क में यूज़ कर सकते हैं। नॉट हम अपना इवन आजकल क्लोथ्स में भी टेक्सचर्स लाते हैं अलग अलग टाइप के। तो आज हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ शीट्स। नाउ यू हैव डू दिस एक्टिविटी। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्टिविटी करेंगे, सब टर्न बाय टर्न आएंगे और अपना मनपसंद टेक्सचर करेंगे। ओके, अब सबसे पहले कौन आएगा करने के लिए? आ जाओ। अब ये स्पॉन्ज टेक्सचर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसे स्पॉन्ज टेक्सचर करते हैं और इसका रिफ्लेक्शन क्या आता है, ठीक है। अब ये टेक्सचर इसको प्रेस ऑन कर रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तब तक आप भी सोच लो आपने कौन सा टेक्सचर परफॉर्म करना है और कल के लिए भी न्यू आइडियाज सोच लो, ठीक है। देखो इन्होंने कितना सुंदर टेक्सचर दिया है। ये क्या बन गया? बटरफ्लाई। ओके, हम इसको बटरफ्लाई टेक्सचर में यूज कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्लैप फॉर हर। अब नेक्स्ट कौन आएगा? आ जाओ। अब ये अनियन टेक्सचर करें। इसको पहले कलर में अच्छे से डिप कर लो। सिंगल में करना है सिंगल में कर लो, डबल में करना है डबल में कर लो। अगर आप 2 शेड्स करोगे वो भी अच्छा है, बट समटाइम्स हम 2 शेड्स को मिक्स भी कर लेते हैं तो वो एक 3rd शेड बन जाती है। अब हमने अच्छे से इसको प्रेस ऑन कर लिया। अब देखो टेक्सचर तो आया है लेकिन टू मच कलर की वजह से प्रॉपरली विजिबल नहीं है, तो हमने टू मच कलर अप्लाई नहीं करना है इसके ऊपर। अगर इन केस आपसे हो गया अप्लाई तो आपने इसको डैब करके रिमूव कर देना है, ठीक है, ताकि ज़्यादा नहीं आएगा। अब इसको करो दोबारा से। सी डिफरेंस पता लग रहा है सबको? Yes. इसमें कितना वाटरी टेक्सचर है, इसमें एकदम टेक्सचर विजिबल है अच्छे से। ओके, अब नेक्स्ट कौन आएगा? क्लैप फॉर हर। आ जाओ। आप कौन सा टेक्सचर करना चाहोगे? लेडी फिंगर। ये सी कितना ब्यूटीफुली उसने लेडी फिंगर टेक्सचर किया है। हम ऐसे भी कर सकते हैं और अगर हमारे पास अगर हम इसको लेडी फिंगर को सेंटर से कट कर दें, इसको हम एज अ स्टेम्प की तरह भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब ये करके दिखाएगी आपको। लाइक दिस। देखो स्टेम बन गई ना अच्छे से। हम इसके साथ बहुत सारी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं, जैसे फ्लावर्स बना सकते हैं, क्लैप फॉर हर, फ्लावर्स बना सकते हैं, स्टेम बना सकते हैं, सीनरी बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। ओके, सो नाउ नोट डाउन योर होमवर्क। कल सब अपना मटेरियल लेकर आएंगे। ओके, ये रिक्वायर्ड मटेरियल मैंने लिखा है, सब अच्छे से आपने नोट डाउन कर लिया ना? Yes, ma'am. ये कल सब अपना मटेरियल लेकर आएंगे और अपने न्यू आइडिया के साथ आएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई और टेक्सचर माइंड में आता है, ठीक है, कुछ आइडियाज लेकर आओ, आप वो भी लेकर आ सकते हो। हम वो भी परफॉर्म करेंगे और सबको बताएंगे उस टेक्सचर की क्या वैल्यू, कहाँ पर यूज हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स? Okay, ma'am. ओके, थैंक यू।